Okay, so let us start with the next protocol. Okay, as we have done one protocol, that is HTTP yesterday. Okay, we have seen the outline, some the message format of the request message and response message. Okay, and in that particular message format, we have seen what are the different fields which are available, and the meaning of different field, and what are the different values and parameters which are present in the message format. Okay, so basically you got some idea about that HTTP. That HTTP is a protocol which is used to access the data over www, that is वर्ल्ड वाइड वेब. ओके, अगर आपको डेटा एक्सेस करना है आपके किसी मतलब ऐसी जगह से, किसी ऐसे सिस्टम से जो कि www से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, देन यू कैन इजीली डू सो. ओके, सो अब थोड़ा सा मिलता जुलता है उससे, लेकिन थोड़ा सा हटके भी है. ओके, सो वी हैव अ नेक्स्ट प्रोटोकॉल दैट इज FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ओके, okay, the next protocol is FTP, that is file transfer protocol. Okay, before starting this topic, let me ask you this: how many of you have implemented or you have configured the FTP on Windows machine, on Linux machine, and you have make use of the FTP also? You have transferred the data using FTP. How many of you have done? Anyone from your side? कभी किसी ने try किया हो? No, these are the interesting thing. Okay, if you are having two फाइल computers, Aman आपने किया है. Very good, Aman. फाइल जरा से किया Okay, so you have done on Windows machine or Linux machine? लिनक्स में Linux में किया था. तो FTPD आपने install किया होगा पैकेज. सर डिफॉल्ट रहता है शायद मेरे से पहले से था डिफ़ॉल्ट पे करें, डिफ़ॉल्ट पे किया था. ओके, चलो, पैकेज पहले से था ऑलरेडी. गुड. ओके, सो एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड SCP? SCP, SCP भी किसने किया होगा? SCP तो बहुत सिंपल है. शाहिद, वेरी गुड शाहिद. SCP. So what do you mean by this SCP? सर सिक्योर कॉपी सिक्योर कॉपी, वेरी गुड. सो जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो ये कमांड है, दैट इज SCP, दैट इज सिक्योर कॉपी. ओके, तो यूजिंग SCP कमांड यू कैन इजीली कॉपी द डेटा फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन यूजिंग लैन. ओके, मतलब आप सिंपल, अगर आपका आपके सिस्टम, if the laptops and the desktop or the system or the computers are in the network, then you can easily transfer files, you can easily copy files from one machine to another machine. Okay, usually this happens. Okay, and most of the time, when I think 1 or 2 week before, I was formatting my laptop. Okay, so at that time the same thing happens. I was in college, so I make use of the SCP command, and I transfer my around 400 GB ka data. I copied into the desktop. So I was getting the speed of around कुछ 50 60, कभी 80 तक भी हम लोग को मिली. 80 Mbps की स्पीड तक से हम मतलब कॉपी हो रहा था. तो यूजुअली आपको लैन पे ज़्यादा स्पीड मिलती है, कंपेयर विद द वाईफाई जो आपका मतलब वायरलेस है, उसे उसके उसके कंपैरिजन में स्पीड तो मिलती है. So this is the one protocol which you can use, which you can make use, and you can copy the file from one computer to next. ये थोड़ा सा रिलेटेड था, इसके लिए मैंने आप लोग से पूछ लिया. आपका जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, दिस इज अ वन प्रोटोकॉल जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू कॉपी द डेटा फ्रॉम वन. We can make the FTP server. Okay, and let all the system which are present in the lab or which are present in the room or which are connected to that particular server can access the data, can access the file from that FTP server. Okay, जैसे होता है ना, जैसे आपका गूगल ड्राइव है. गूगल ड्राइव बेसिकली क्या, इट पुट ऑल द थिंग्स. ओके, आपको कहीं से कुछ लिंक मिलती है, कुछ कोर्सेज है, और बहुत सारे वीडियो फाइल्स है which are present in which are hosted on the Google Drive. Okay, let आपने खाली एक लिंक सबको दे दिया, so all the people will go to that particular link and they will copy and they will download the particular data or file which are present on the FTP server.
तो ये FTP सर्वर आपका कुछ ऐसा काम करता है। इसका भी थोड़ा इसका एक डायग्राम है, दैट डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट। इसमें जो टर्म्स है वो टर्म्स आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है, बाकी बाकी बहुत सिंपल प्रोटोकॉल है। अच्छा, ये काम आपका HTTP से भी हो सकता था। यू कैन मेक यूज ऑफ द HTTP प्रोटोकॉल एंड यू कैन कॉपी द डेटा फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन, आप कर सकते थे। बट यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना फॉर्मेटिंग वगैरह का इशू आता है। ओके, फॉर्मेटिंग का इशू कैसे है कि इट डज नॉट हैव दैट, कि मतलब ऐसा भी हो सकता है कि द फाइल विच यू आर कॉपिंग फ्रॉम अनदर सिस्टम, फ्रॉम एक मशीन से कॉपी कर रहे हो दूसरे मशीन पे कॉपी करने के लिए, तो हो सकता है कि वहाँ का जो मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग है, यहाँ का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, वहाँ का मतलब जो फाइल सिस्टम है वो अलग है, यहाँ का फाइल सिस्टम अलग है। तो ऐसे कुछ कॉन्फ्लिक्शन आ सकते हैं। तो FTP इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करके आपको फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए अलाउ करता है। चलो देखते हैं कि करके। This is very simple protocol, FTP. Okay, so FTP, that is file transfer protocol, is the standard protocol provided by suite, that is TCP/IP protocol suite. Okay, so this is a standard protocol used for copying a file from one host to another host. Okay, एक machine से दूसरी machine में you can copy the file. uh, Although transferring files from one system to another system seems simple and straightforward, but we have a lot of challenges which we need to face and we need to resolve. Okay, let us see what are the different challenges and what are the different problems we have to deal with it. Two system from which you are making the transaction, two system between you are making the transaction, so may use different file name convention. File naming हो सकता अलग है. Two system may have different ways to represent the data. Okay, two system may have different directory structure also, different operating system have. Okay, तो ऐसा अलग अलग एक स्ट्रक्चर हो सकता है, नेमिंग कन्वेंशन, फॉर्मेटिंग, तो अलग अलग ये चीज़ें हो सकती है. So all of these problems have been solved by the FTP in a very simple and elegant approach. Okay, although we can transfer, the same point I told you in the previous slide is that we can transfer files using HTTP also. FTP is a better choice to transfer large files or to transfer files using different formats. Okay, so simple introduction here. So this is the main diagram you can see for FTP, that is file transfer protocol. Okay, so on the left hand side you have a client and on the right hand side you have a server. Okay, so on the left hand side, that is the client, you are having user interface, control process, data transfer process. Okay, ये तीन सब मॉड्यूल्स है, तीन मॉड्यूल्स हैं हमारे क्लाइंट के पास में. और सर इन सर्वर आई एम हैविंग कंट्रोल प्रोसेस एंड डेटा ट्रांसफर प्रोसेस. ओके, बिकॉज आपके सर्वर को कोई यूजर इंटरफेस की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज वॉट एवर फाइल यू वांट टू डंप एट द सर्वर साइड यू हैव डंप्ड ऑलरेडी. ओके, तो आपने 200-500 TB का जो भी डेटा था वो आपने सर्वर पे डाल दिया, या फिर यू विल कीप ऑन अपडेटिंग द थिंग्स. ओके, तो आपको उसके लिए कोई यूज़र इंटरफेस तो रिक्वायर्ड है नहीं. हाँ, जो क्लाइंट है तो उसको फाइल्स देख के डाउनलोड करना है, उसको फाइल्स देखना है, सॉर्ट आउट करना है एंड सेलेक्टेड फाइल्स ही डाउनलोड करना है. सो इट मे रिक्वायर द यूजर इंटरफेस. ओके, so on the client side, that is on the left hand side, you can see we have user interface panel, we have control process, we have data transfer process. Okay, remember that for the transaction of any data, any file, any information from client to server. Okay, मतलब सर्वर से जब आप करेंगे, so we have two phases. Okay, we have two phases. One is the control process which take care of the connection, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना. ओके, कनेक्शन को ख़त्म करना, यानी कनेक्शन को टीयर डाउन करना, और फिर कनेक्शन को मेंटेन रखना. तो ये कंट्रोल प्रोसेस के मॉड्यूल के मतलब के रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ओके, और फिर डेटा, अच्छा एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, आफ्टर द कनेक्शन हैज़ बीन इस्टेब्लिश यू नीड टू ट्रांसफर द फाइल. ओके, you need to transfer all the file which you have selected, which you want to download or which you want to transfer. Okay, so in this particular process, this particular module will take care of each and every file, each and every bit of the data which you want to transfer. तो ये आपके दोनों फेजेस अलग अलग है, दोनों प्रोसेस मतलब दोनों का जो फेजेस है उनके अलग अलग मॉड्यूल्स है, एज यू कैन सी. तो वो दोनों मॉड्यूल्स आपको दोनों जगह पर दिखेंगे, यानी कि क्लाइंट साइड पर भी और सर्वर साइड पर भी. ओके, and you can see the arrow mark, control process being controlled by the control connection. Okay,
and the data transfer process are connected using the data connection. Okay, so they have some sort of connection. So you can say some kind of physical media, some kind of, you know, any media. Okay, any transmission media. It may be a guided transmission media or it may be unguided transmission media. Okay, ये clear है? उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड में देयर इज अ लोकल फाइल सिस्टम. लोकल फाइल सिस्टम हमारी हार्ड डिस्क समझ लो. ओके, सो दैट्स अ लोकल फाइल सिस्टम. And right hand side में you will find remote file system. So that's a, you know, storage of the server. Okay, that's a storage of server in which your data is present. Okay, in which the data is present and you want to download that particular data. Okay, so ये वाला जो है वो आपका सर्वर साइड का, ये वाला जो है वो आपका सर्वर साइड का स्टोरेज है एंड दिस इज योर लोकल स्टोरेज. ओके ओके, सो ये सिंपल डायग्राम है. अब देखते हैं डायग्राम को और हम लोग समझते हैं. This is a basic model of your FTP. Okay, the client has three components as we have already seen: the user interface, client control process, and client data transfer process. Okay, आपको याद रखने वाली चीज़ है ये. Okay, so client side पे 3 component और server side पे 2 component. सर्वर साइड पे आपको यूजर इंटरफेस नहीं मिलेगा, बाकी दोनों में सेम. The control connection is made between the control processes. Okay, तो दो control process, the control process which is present on the, you know, client side, the control process which is present on the server side, they both are connected with the control connection as we have seen in the diagram. The data connection is connecting the data transfer process at the client side and the server side का data transfer process. So both are connected with the help of data connection. तो ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना होता है जब इसका इस एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ऐसे एक्सप्लेन. अब तो ये पूरा जो है ना ये एक्सप्लेनेशन है, सिर्फ जो डायग्राम है उसका एक्सप्लेनेशन. ओके ओके, टू कनेक्शंस. The two connections in FTP have different lifetimes also. The control connection, first we talk regarding the control connection. It remains connected during the entire interactive FTP session. Okay, जब से स्टार्ट होगा तब से एंड तक आपका जो कंट्रोल कनेक्शन है, इट विल रिमेन एक्टिव, इट विल रिमेन कनेक्टेड. वाई? जैसे आपने कनेक्शन के लिए आपने स्टार्ट किया, आपने रिक्वेस्ट भेजा, तब से कंट्रोल कनेक्शन एक्टिव हो गया. ओके, और कब तक रहेगा? जब तक कि आपका उसके बाद में डेटा ट्रांसफ़र हो के ख़त्म हो के फिर जब आपस में एक दूसरे को बाय नहीं बोल देते, तब तक कि आपका कंट्रोल कनेक्शन एक्टिव रहेगा. ओके, उसके बाद में फिर वो जाके डिस्कनेक्ट हो. The data connection is open and then closed for each file transfer activity. So जो data connection है, it is responsible for the transfer of each and every file. So आपने पहले connection, आपने using control connection पहले connection establish हुआ. Connection establish होने के बाद में भाई दोनों को हरी झंडी मिल गई कि now the control connection is established. Now we both are connected. Okay. Now whatever you want to transfer, you want to transfer the file or anything you want to transfer, you can start. Okay, so your client will start downloading some files or data from that particular server. Okay, so when it will start the, you know, downloading process, so what will happen, that data connection will be open for that particular file. As soon as the download is continue, so जब तक आपका वो चलेगा और उसके बाद में जैसी वो फाइल, फॉर एग्जांपल आपकी 2 MB 4 MB 10 MB वो फाइल की साइज़ थी, जैसे ट्रांसफ़र कंप्लीट हुआ आपका डेटा कनेक्शन भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. इट विल ओपन एंड देन क्लोज फॉर ईच फाइल ट्रांसफ़र एक्टिविटी. ओके, तो आपका जो कंट्रोल कनेक्शन है, दैट विल रिमेन कनेक्टेड ड्यूरिंग द एंटायर इंटरैक्टिव FTP सेशन. ओके, बट वो डेटा कनेक्शन विल बी ओपन एंड देन क्लोज फॉर ईच एंड एवरी फाइल. ओके, दोनों के अंदर दिमाग मतलब वो क्लियर रखो. ओके, तो कंट्रोल कनेक्शन एंड डेटा कनेक्शन, दीज आर दी टू कनेक्शन विच आर रिक्वायर्ड इन FTP इन ऑर्डर टू ट्रांसफर अ फाइल. Okay, so your control connection will remain active, will remain connected during the entire interactive FTP session. Okay, but your data connection will be open and then close for each and every file activity. Okay, it opens each time command that involve transferring files are used and then closes when the file is transferred. So after the file is transferred, that data connection will be closed. Okay, फिर नई फाइल है, फिर कुछ आपकी 4 MB की एक फाइल है. So for that 4 MB file, again the data connection will be open, file transfer, again the data connection will be closed. Okay, so for each and every time you are transferring the data, that will be okay.
एक बार हो गया आपका करके सारे की सारी, आपके पास में 6 फाइल थी, so you have downloaded all 6 file, okay, all the file which you want to download. When you are done with that particular thing, then you will close the control connection, okay. So then after that you will close the control connection, and then the things will go off, okay. So we need to keep in mind that we have two connection. One is the control connection and second is the data connection. Control connection remains open for the entire interactive FTP session, for the entire interactive FTP session, okay. Your data connection will be open and then close for each file, okay. This is regarding the two connection. First is the control connection. So during this control connection, okay, तो vice versa दोनों होता है. Commands are sent from the client to the server and responses are sent from the server to the client. तो आपको पता है, तो उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट है, that will be done with the help of this control connection. And some FTP commands are this. हम लोग तो FTP पहले FTP को सब कमांड के थ्रू यूज करते थे. नाउ वी आर हैविंग GUI बेस्ड FTP हमारे पास में, जैसे कि आपका FileZilla is the best example. You can say the FileZilla application. You have this application on Windows also and on Linux also. You have these application, that is FileZilla. ऐसे बहुत सारे application है. You can make use of these application and then you can easily connect to the server. You can easily connect to the server and you can download the required files, okay. So that is very simple. But earlier days we were not having any GUI based application, okay. So what we used to do, we used to make use of all these command and then we used to download the file from the server, okay. तो पहले FTP की commands यूज होती थी, ये सारी FTP की commands हैं. abor, cdub, change, मतलब ये सारी कमांड्स है जिसके थ्रू हम लोग ऊपर नीचे डायरेक्टरी चेंज करना वगैरह वगैरह, DL, लिस्ट, MKD, PSS, PSV, तो ये बहुत सारे कमांड्स हैं. सो याद रखने की कोई खास ज़रूरत नहीं, 2-4 ऐप कमांड याद रख लो, सो दैट विल बी इनफ फॉर यू, ओके. CWD तो आपको पता है, CWD दैट इज करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ओके, या चेंज करना अगर आपको तो उसके लिए शायद MKD, क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी, MKD, PSS पासवर्ड के लिए, PSV यूज़र पासवर्ड, सर्वर चूजेज अ पोर्ट. तो ऐसे अलग अलग कमांड्स है इसके अंदर. सो वी कैन मेक यूज ऑफ दिस FTP इफ यू आर यूजिंग द कमांड लाइन FTP, अगर आप यूज कर रहे हो तो यू कैन मेक यूज ऑफ ऑल दिस कमांड्स. अच्छा, ये जो था आपका, ये FTP कमांड्स थी. और ये जो है वो कुछ रिस्पॉन्सेस है, कुछ रिस्पॉन्सेस की मतलब के कुछ कोड है. कोड 125 डेटा कनेक्शन ओपन नाउ, ओके. then 150 file status okay, command okay, service ready, service closing. So all these codes are used in that particular जो आपका मैसेज फॉर्मेट होता है उसमें कहीं ना कहीं कोड रहेगा, तो वो कोड की जगह पर ये सारे कोड्स आते होंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. So this is regarding control connection, okay. Now we'll move to the data connection, okay. The data connection is also very important because actual data transfer start from this data connection only. If the data connection is not established, is not active, then you cannot start the transferring of file, transferring of data, okay. So communicating over data connection, the purpose and implementation of the data connection are different from those of the control connection. As you know that the purpose of the control connection was different. The purpose of the control connection was to establish the connection and to tear down the connection, to maintain the connection. Establish करना, maintain करना और tear down करना, ये control connection का काम था. But if we talk about the data connection, the purpose is different, okay. We want to transfer files through the data connection because each and every, I told you that for each and every file this data connection will be open and then close. For each and every file the data connection will be open, they will make the transfer and it will be closed, okay. So the client must define the type of the file, structure of the data, transmission mode, file transfer. So usually your operating system take care of all these things, okay. ये सारी चीज़ों की तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खुद टेक केयर कर लेता है, सारी इन्फॉर्मेशन खुद फैच कर लेता है. फाइल टाइप अलग अलग होते हैं. पहले FTP कैन ट्रांसफर वन ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप्स अक्रॉस द डेटा कनेक्शन. ASCII फाइल, AppStatic फाइल, इमेज फाइल, ये तो बहुत पहले का लिखा हुआ है. बट नाउ यू कैन सी वी कैन
now we can transfer any kind of file if you are having अभी लोग टॉरेंट से डाउनलोड करते हैं तो टॉरेंट की फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, फिर वीडियो फाइल के अंदर वीडियो अलग अलग फॉर्मेट्स है, फिर इमेज, ऑडियो, टेक्स्ट फाइल. सो वी हैव लॉट ऑफ फॉर्मेट्स which are available right now. We can download and we can transfer any kind of file, okay, any format of file. ये मैंने इसके लिए रहने दिया कि earlier we used to transfer this kind of file only. तो स्टार्टिंग वाला था एकदम फेज, तब यही कर सकते according to the book, okay. But now we can transfer any kind of file which are available right now across us, okay. Transmission mode. Regarding this transmission mode, so we have stream mode, block mode and compress, or we can say compress mode. So we have हमारे पास में दो है शायद, okay. FTP can transfer a file across. Actually मैंने भी बहुत दिन से देखा नहीं, लास्ट टाइम बस बताया था लास्ट प्रीवियस ईयर वालों को, अभी आप लोग को बता रहा हूँ. मैं कि मतलब यूजुअली ऐसा है कि मैं थोड़ा आउटलाइन सारे प्रोटोकॉल्स का मतलब के बता देता हूँ, and student used to study from their self only because these protocols are very simple. बस अगर रीड करना है, डायग्राम याद रखना है, उनके मैसेज फॉर्मेट अगर है तो मैसेज फॉर्मेट की एक दो बार प्रैक्टिस करना है, कुछ कोड है, स्टेटस है, फ्रेजेस है, सो वी नीड टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स, ओके. तो यूजुअली ये लास्ट वाला चैप्टर तो आप लोग खुद ही प्रिपेयर करते हैं, बट अभी है हमारे पास में टाइम, सो वी आर गोइंग थ्रू ईच एंड एवरीथिंग, ओके. So FTP can transfer a file across the data connection using one of the following three transmission mode. अब चलो बात अभी डेटा कनेक्शन की, ठीक है भाई. डेटा कनेक्शन फॉर ईच एंड एवरी फाइल द डेटा कनेक्शन विल बी ओपन एंड देन क्लोज, ओके, फॉर ईच एंड एवरी फाइल. सो जब आपका जब ट्रांसफर होगा तो ट्रांसफर उसके अंदर कुछ ट्रांसमिशन मोड है, ओके. दोज ट्रांसमिशन मोड आर स्ट्रीम मोड, ब्लॉक मोड और कंप्रेस मोड. तो स्ट्रीम मोड एंड ब्लॉक मोड या स्ट्रीम मोड और कंप्रेस मोड, तो शायद दोनों के नाम एक ही है. The stream mode is the default mode. Data are delivered from FTP to TCP as the continuous stream of bytes. Stream delivery of services हम लोगों ने कहाँ देखा था, आपको अगर याद होगा तो stream delivery of services TCP में देखा था हम लोगों ने, ठीक है. बिकॉज TCP क्या क्या प्रोवाइड करता है आप लोग को, स्ट्रीम डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ओके. तो स्ट्रीम के अंदर क्या होता है, बेसिकली एक स्ट्रीम मेंटेन होती है फ्रॉम वन पॉइंट सेकेंड पॉइंट, मतलब आपका सर्वर और क्लाइंट या फिर आपका एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में एक ऐसा पाइप होता है, या उसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी ट्यूब. वी हैव यूज दैट पर्टिकुलर टर्म, दैट इज इमेजिनरी ट्यूब. Imaginary tube is nothing but stream, okay, from which your bytes will be transferred, okay. तो यहाँ पर आपका डेटा कैसे ट्रांसफर होगा स्ट्रीम के अंदर, यहाँ पर स्ट्रीम में आपका डेटा बाइट्स के फॉर्म में ट्रांसफर होगा, एक बाइट, दूसरा बाइट, तीसरा बाइट. फिर हम लोगों ने इसमें और भी देखे थे कि हर बाइट को एक एक पैकिंग होती है, और पैकिंग को हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंट, ठीक है. अगर याद होगा आप लोग को तो ऐसे 4, 5, 3, 2 ऐसे जो आपके बाइट्स होते हैं उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है. उनकी नंबरिंग होती है, फ्रैगमेंट्स की नंबरिंग होती है. सो फॉर टेकिंग for keeping an account of all the bytes and all the fragments, we used to number all those particular bytes, okay. So byte number भी होता है, बाद में fragment number भी होता है, उसके ऊपर नंबरिंग होती है. फ्रेगमेंट ही बोले थे ना, ये कुछ और बोले थे, याद नहीं मुझे, जहाँ तक याद है तो वो फ्रेगमेंट ही था, शायद कुछ और होगा तो ठीक है. And in the block mode, that is the second one, block mode, data can be delivered from FTP to TCP in blocks. अब ये blocks के फॉर्म में डेटा कुछ कंप्रेस होके जाता होगा, इसके लिए नाम उसका कंप्रेस भी है, ठीक है. तो स्ट्रीम मोड एंड कंप्रेस मोड या स्ट्रीम मोड एंड ब्लॉक मोड. स्ट्रीम मोड में डेटा आपका बाइट्स के फॉर्म में जाएगा और ब्लॉक मोड में आपका डेटा ब्लॉक्स के फॉर्म में जाएगा. आगे कुछ इन्फॉर्मेशन है कि देखते हैं. हाँ, तो ये खाली ट्रांसमिशन मोड में आपको इतना ही भाली बताया कि ये दो अलग अलग मोड है जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है, तो उसका ज़्यादा डिटेल नहीं है. रिगार्डिंग फाइल ट्रांसफर occurs over the data connection under the control of the command sent over the control connection, and we should remember that the file transfer in FTP means one of the three things. या तो आप फाइल रिट्रीव करेंगे, या तो स्टोर करेंगे, या तो डायरेक्टली लिस्टिंग करेंगे. तो बेसिकली क्या करते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल आपके कुछ फाइल्स है, फॉर एग्जांपल मतलब कुछ फाइल्स अगर है आपके सर्वर पे, कुछ फाइल्स है, सो व्हाट यू कैन डू, इधर यू कैन लिस्ट आउट ऑल द फाइल्स, ओके. सो क्लास वाला ऑप्शन, ओके. मतलब जो फ्लो है ना, वो फ्लो एक्चुअली फ्लो बता रहा है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है दैट इज द फ्लो बेसिकली. सो अगर मैंने खाली जो सर्वर पे जो बहुत सारी फाइल्स है,
if I'm just listing all the files and directories which are present on the server, then जो कनेक्शन जो आपको आपका डेटा जो ट्रांसफर कहाँ से का हो रहा है, सर्वर से क्लाइंट को डेटा ट्रांसफर हो रहा है. बेसिकली यू कैन सी द लास्ट वन. ओके, तो आपने क्या किया, लिस्ट आउट किया. तो लिस्ट आउट करने पर आपके सर्वर ने सारी जो कमांड्स थी, सॉरी सारी जो फाइल्स एंड फोल्डर्स थे वो आपको उसकी इंफॉर्मेशन भेज दिया. तो डेटा फ्लो कहाँ से का हुआ, दैट इज फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट डेटा हुआ. चलो, आपने कुछ फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, आपने कुछ फाइल डाउनलोड करना है, ठीक है. सर्वर पे बहुत सारी मूवीज़ पड़ी है, बहुत सारी वीडियो फाइल, बहुत सारे ऑडियो मतलब के फाइल्स पड़ी है, तो आपको उसको डाउनलोड करना है. सो व्हेन यू डाउनलोड दैट पर्टिकुलर फाइल, मे बी video, audio, text, whatever is that. So if you are downloading or if you are retrieving that file, then the flow of data, the flow of transfer from will be from server to the client. Okay, because you are downloading on your local machine. Okay, आप अपने local storage में download कर रहे हो. कहाँ से download कर रहे हो, वो remote storage से local storage में आप download कर रहे हैं. So the flow will be from, अच्छा ये कोई खास point नहीं है, but फिर भी एक मतलब point है साथ में, इसके टॉपिक छोटा सा था, इसके लिए मैं बता दिया आप लोग. एंड स्टोरिंग अ फाइल, इफ यू वांट टू, बहुत से लोग होते हैं ना अपलोड करते हैं. सो यू हैव सम वीडियो फाइल, यू हैव सम डेटा विच यू वांट टू अपलोड ऑन द सर्वर. ओके, सो व्हेन यू विल अपलोड दैट पर्टिकुलर फाइल ऑन द सर्वर, सो बेसिकली द फ्लो विल बी फ्रॉम क्लाइंट टू द सर्वर. सो दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग, बट फिर भी मैंने लिस्ट आउट कर दिया. सिक्योरिटी ऑफ FTP, सिक्योरिटी ऑफ FTP protocol was designed and when security was not a big issue. मतलब इसके अंदर कुछ खास सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन they provide the security using SSL. तो लास्ट में आप लोग देख सकते हैं, in this case FTP is called SSL FTP because the service the security part is provided with the help of the SSL, that is secure socket layer. तो ये भी एक प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से सिक्योरिटी हम लोग अपने FTP कनेक्शन, दैट इज कंट्रोल एंड डेटा कनेक्शन को हम लोग प्रोवाइड करते हैं. ओके, ये इसके अंदर लिखा हुआ है और कुछ खास नहीं. सो ये आपका FTP के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, FTP के बारे में कुछ डेटा. ओके, तो हम लोग ने ये मेन डायग्राम देखा स्टार्टिंग में, and we came to know that in this diagram you can find on the left hand side we have a client, on the right hand side we have a server. Okay, and we have two connection. One is the control connection which is made between the two control processes on the client side and the server side respectively, and we have a data connection between the data transfer phase of client side and server side respectively. Okay, and the control connection make we use control connection in order to establish the connection, maintain the connection, tear down the connection. So all this control, यानी सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के काम है, जो कंट्रोलिंग वाले काम है, आपका कंट्रोल कनेक्शन देखेगा. ओके, एंड आफ्टर द कंट्रोल कनेक्शन हैज बीन डन इट्स वर्क, so what it will do, data connection is there. Okay, so data connection is the one which will which will be open and then close for each and every file you are transferring from one machine to another machine. ओके, अच्छा आप लोग बोलेंगे ट्रांसफर करने में, डाउनलोड करने में ही करेगा, नहीं, जब अगर आप अपलोड करेंगे तो भी आपका डेटा कनेक्शन फॉर ईच एंड एवरी फाइल के लिए यूज होगा. ओके, सो FTP के अंदर ये दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल कनेक्शन, डेटा कनेक्शन क्यों यूज़ करते हैं. कंट्रोल कनेक्शन में दो प्रोसेस है जो कि इंपॉर्टेंट है, सर्वर साइड में वो भी सेम दो प्रोसेस जो कि इंपॉर्टेंट है. ओके, and you have a local file system, that is your local storage, and on the right hand side you have a remote storage. Okay, तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट. उसके बाद में इसमें तीन कंपोनेंट, इसमें दो कंपोनेंट. देन वी हैव टू कनेक्शन, दैट इज कंट्रोल कनेक्शन एंड डेटा कनेक्शन. In control connection we make use of some command like these are listed over here, some responses command code. Okay, एंड देन उसके बाद में फाइल टाइप के बारे में, उसके बाद में ट्रांसमिशन मोड, दैट इज स्ट्रीम मोड एंड ब्लॉक मोड. स्ट्रीम मोड में स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में आपका डेटा ट्रांसफर होगा, और कंप्रेस मोड या ब्लॉक मोड में आपका डेटा ब्लॉक में ट्रांसफर होगा. मे बी सम काइंड ऑफ ब्लॉक्स इज देयर. ओके, इसकी डिटेल आपको बुक में मिल जाएंगी अगर आप लोग जो बुक रेफर करेंगे. मैं इसके लिए नहीं भी ऐड किया बिकॉज TCP टॉपिक चल रहा है, ज़बरदस्ती का हम लोग उसके अंदर घुसेंगे तो फिर और डिटेल हो जाएगी. इसके लिए थोड़ा सा मैंने रेस्ट्रिक्ट किया, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उसके अंदर है, इसका इन्फॉर्मेशन है. तो योर डेटा इज पुट इन द ब्लॉक, और उसको फिर कंप्रेस करते हैं और इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स में डेटा आर सेंड. तो ये आपके ट्रांसमिशन मोड है. देन योर फाइल ट्रांसफर फ्लो from server to the client or from client to the server. So these are the three cases: retrieving a file, storing a file, and directory listing. So these are the three, and last is the security. Okay,
So this is regarding your FTP, file transfer protocol, the very simple protocol from which we can transfer a file across one machine to another machine. एक मशीन से दूसरी मशीन पे हम इजीली कर सकते हैं. अगर आप लोग को टाइम मिलता है या टाइम निकाल के यू मस्ट इम्प्लीमेंट दिस FTP प्रोटोकॉल. FTP को आप लोग ज़रूर इम्प्लीमेंट करना. You can just go through the steps which are listed on internet. आप ब्राउज करके सारे स्टेप्स निकाल सकते हैं. एक सिस्टम अगर आपके पास में दो है या फिर आप अपने मशीन को, आपका लैपटॉप है, आपका डेस्कटॉप है, सो यू कैन मेक दैट पर्टिकुलर मशीन योर मशीन एज द FTP सर्वर. ओके, आप उसको FTP सर्वर बनाओ एंड यू पुट ऑल द डेटा. ओके, एंड कमांड के थ्रू कुछ एप्लीकेशन वगैरह अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएंगी. सो यू कैन सर्च फॉर some application on Android. Okay, Play Store पर देखना, from which you can access your data, your files which are present on your desktop machine. So anywhere, if you are present anywhere, okay, बाहर कहीं पर भी है, you can access the data from your machine. अगर आपकी मशीन अप है तो ओके, आपकी मशीन अगर ऑन है, नेटवर्क में कनेक्टेड है, सो यू कैन इजीली गेट द डेटा. ओके, सो कभी ट्राई करना FTP सर्वर बनाने का. ठीक है, नो दीज आर दी वेरी सिंपल थिंग जो कि हमको आना चाहिए. ओके, आप लोग के प्रैक्टिकल में ये चीज़ होती थी लास्ट 2-3 साल पहले तक. बहुत अच्छे प्रैक्टिकल्स थे, उसमें सर्वर बनाना हम लोग सीखते थे. FTP सर्वर बनाओ, SMTP सर्वर बनाओ, आपका DHCP सर्वर बनाओ. तो ये अलग अलग सर्वर बनाना उसमें हम लोग सीखते थे. अभी सब पूरा चेंज कर दिया है, तो उसमें मतलब काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट, काफ़ी सारा प्रैक्टिकल काफ़ी चेंज हो गए हैं. ओके, सो डोंट वरी, आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं. इन अ लॉट ऑफ वीडियोस आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड इंटरनेट, सो यू कैन जस्ट रेफर दोज वीडियोस एंड यू कैन implement and you can make the server that is FTP server. Okay, I hope you will try this one. Okay, so आज के लिए बस इतना. 5 मिनट बाकी है, but still we are covering one protocol per day. Okay, so HTTP हुआ, FTP हुआ. Okay, tomorrow तो कल नहीं है, but we will start with email. Okay, electronic mail. In this particular topic we are going to cover 2 protocol. One is SMTP and second is POP. Okay, POP. Okay, so even your POP is not there, but as a part we will try to cover that also. So email, we will cover these particular topics in this one. Okay, और उसके बाद में फिर टेलनेट है, तो टेलनेट देखेंगे. तो टेलनेट है, उसके बाद में फिर सिक्योर शेल है, SNMP है, उसके बाद में फिर थैंक यू. तो इतना अगर हो जाता है, हमारा अगला हफ्ता भी है हम लोग के पास में. सो श्योरली विल कवर दिस पर्टिकुलर थिंग. और उसके बाद में फिर हम लोग ट्राई करेंगे कुछ एग्ज़ाम के क्वेश्चन देख के फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आप लोग अगर MCQ बेस्ड है तो फिर एग्ज़ाम के क्वेश्चन, MU के क्वेश्चन देख के भी कोई फ़ायदा नहीं है. ओके, सो आज के लिए इतना. स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग. मोहिबुद्दीन शेख.